हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इन दिस कॉन्टिनेंट शॉर्ट सीरीज दैट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. As you know, this continent is very advanced. In fact, the continent that is related with the era of Renaissance. Yes, this continent, it occupies almost 2% of the overall Earth's surface, and on that scale, it is the second smallest continent. अगर हम 7 continent का model consider करते हैं तो ठीक है. Then this continent is the third most populous, however. Yes, third most populous है after Asia and Africa. That is the third one. सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट की, दैट इज रशिया, दैट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ ओवरऑल एरिया. बट यूरोप इज एक्चुअली पार्ट ऑफ यूरेशिया, ठीक है, जहां पे यूरोप और एशिया एज यू नो ए टू कॉन्टिनेंट रादर फॉर्म्स ए सिंगल लैंड मास ओनली, है ना. तो यहां पर सेपरेट करता है एशिया एंड यूरोप को, दैट इज द यूराल माउंटेन रेंज, द यूराल रिवर और ग्रेटर कोकाशियस रेंज. Okay, so Europe in that particular sense is very unique continent because it is also, you know, जहाँ पर 50 plus countries है, and these countries are rather reflections of the rivers and their flow. You know, Europe के लिए एक खास बात क्या है, that Europe in is a result of, or at least politically Europe is result of and culturally also a result of this river flow on their nature. कभी यूरोप के अगर rivers आप देखोगे तो all they are flowing parallel, and because they are flowing parallel, it leads to the parallel evolving culture also, and that then gives rise to a different demand for political nation also. अच्छा, one more thing also guys, this Europe as a continent is also known as the पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. जैसे आपको पता होगा कि पेनिनसुला क्या होता है. पेनिनसुला मतलब एनी लैंड मास दैट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स, 3 sides बाय वाटर, एंड वन ऑफ इट्स साइड इज कनेक्टेड टू दी लैंड मास, एंड दैट व्हाट मेक्स दिस लैंड मास वेरी यूनिक. यूरोप के केस में ये खुद भी एक पेनिनसुला ही है, सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, ठीक, ऑन 3 sides, connected to the Eurasian on the other, and it has number of peninsula, जैसे Scandinavian peninsula, या you will find Italian peninsula, या you will find the eastern part, है ना, the Iberian peninsula, right? So that particular region you will find it well connects with the European region, and hence it is known as peninsula of peninsula. So 2% landmass, second smallest continent, third largest in terms of population, largest country Russia, number of time zones, and